Hello everyone and welcome to FinSpace. In this video, we're going to discuss about Tata Consumer Product Ltd. In this video, we're going to discuss its financials, its peer comparison, its SWOT analysis and much more. So please watch the video till the end. So let's start the video. Tata Consumer Product Ltd, formerly Tata Global Beverages Limited, is an Indian multinational non-alcoholic beverages company headquartered in Kolkata, India. It is a subsidiary of a Tata Group. Talking about the industry, so the total organized Indian food and beverages industry is expected to be rupees 4 lakh crores market as on 2019 and projected to grow by 2.5x to rupees 10 lakh crores by 2025. अब अपन बात करते हैं टाटा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की. ये नंबर 1 है इन कैटेगरी बाय वॉल्यूम इन इंडिया एंड नंबर 2 बाय वैल्यू. हर 3 में से एक घर इंडिया के अंदर इस ब्रांड की चाय पीता है. द नेक्स्ट इज टाटा सॉल्ट. ये इंडिया का पहला पैकेज्ड आयोडाइज सॉल्ट है और पिछले कुछ सालों ने टाटा सॉल्ट ने अपने कस्टमर्स का काफ़ी ट्रस्ट गेन करा है और उसी के कारण कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ गई है एंड हेंस इट्स एन अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर इन इंडिया. नाउ कम्स टेटले. ये नंबर 1 है कनाडा के अंदर और नंबर 3 है यूके में. 45 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे कंज्यूम करते हैं एक दिन में 40 देशों में मिलाकर. नाउ कम्स 8 o'clock. इट्स अगेन अ नंबर 4 रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफ़ी ब्रांड इन यूएसए और इस ब्रांड के ई कॉमर्स से आने वाले रेवेन्यू में 60% तक की ग्रोथ देखी गई है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे कोविड-19 से पहले. फिर आती है टी पिंक्स विच इज़ नंबर 1 सुपर प्रीमियम ब्रांड पोजीशन इन द यूके विद 67% मार्केट शेयर. देन कम्स हिमालयन. ये नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है इंडिया के अंदर. फिर आती है टाटा संपन्न. ये इकलौती ऐसी ब्रांड है मार्केट के अंदर जो पल्सेस बेचती है, यानी जो कंपटीशन है मार्केट में वो नेग्लिजिबल है. फिर आती है गुड अर्थ. अभी रिसेंटली यूएसए में इस ब्रांड ने अपने अंदर एक और सब सेगमेंट ऐड करा है ऑफ आयुर्वेदा सो डैट ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस को और ग्रो कर सके हर्बल स्पेस में. और बाकी जो कुछ टाटा की ब्रांड्स हैं उनके नाम है टाटा ग्लूको प्लस, टाटा वाटर प्लस, टाटा एनएक्स, लागर एंड टाटा चा. TCPL ने अभी रिसेंटली धनसिरी टी एंड इंडस्ट्रीज का बिजनेस एक्वायर करा है टू सिक्योर द मार्केट शेयर इन राजस्थान. अब बात करते हैं अपन TCPL के जॉइंट वेंचर्स की. तो द फर्स्ट वन इज टाटा स्टारबक. So the Tata Starbucks is a 50-50 joint venture between TCPL and Starbucks और इसकी सेल्स ग्रोथ में अभी 21% की ग्रोथ देखी गई है ड्यू टू स्टोर एक्सपेंशन. हालांकि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का भी इसकी सेल्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. टाटा स्टारबक्स ने अभी 1920 के अंदर 39 स्टोर्स और ऐड करे इंडिया में और अब इसके टोटल स्टोर्स 185 से ज़्यादा हो चुके हैं. टाटा स्टारबक्स 11 सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है इंडिया में. और जो दूसरा जॉइंट वेंचर है TCPL का वो है नरिश्को बेवरेजेस लिमिटेड विच इज़ अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद पेप्सिको इन इंडिया. और अभी इस जॉइंट वेंचर के रेवेन्यू के अंदर थोड़ा डिक्लाइन आया है ड्यू टू कोविड-19 और TCPL अब ये प्लान कर रहा है कि वो इस जॉइंट वेंचर के अंडर पेप्सिको के 50% स्टेक को अक्वायर कर ले. नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो यू कैन सी द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन नाउ. इसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि जो कंपनी की टोटल इनकम है वो लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है विद द CAGR ऑफ 7.73% विच इज़ अ गुड साइन. एंड द सेम केस इज विद ग्रॉस प्रॉफिट, EBITDA एंड कंपनीज EBIT. These three has grown by 6.97%, 13.77% एंड 6.62% रिस्पेक्टिवली. बट लेकिन अगर अपन कंपनी की नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो वी कैन सी अ स्लाइट डिक्लाइन इन द प्रॉफिट इन मार्च 19. सो इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी का जो टैक्स एंड अदर एक्सेप्शनल आइटम्स की कॉस्ट है उसमें इंक्रीज आया है एज कम्पेयर टू मार्च 18 एंड द प्रीवियस ईयर्स. और टैक्स एंड अदर एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो मार्च 20 के अंदर इट हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 100% एज कम्पेयर टू मार्च 19. So basically, exceptional items mainly includes cost related to merger of India food business and non-cash impairment loss on goodwill relating to business of Australia and US. और अगर अपन कंपनी के EBIT पे देखेंगे तो ये ग्रो हुआ है अराउंड 41% से एज कम्पेयर टू मार्च 19. तो
मार्च 20 के अंदर जो इंडिया फूड बिजनेस के साथ मर्जर हुआ है उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर. नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन कंट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन ऑफ दिस कंपनी. सो बेसिकली 62% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम इंडिया, 18% फ्रॉम यूएसए, 14% फ्रॉम यूके एंड यूरोप and 4%, 2% from Canada and Australia respectively. And if we break down the company's revenue in the two segments, that is Indian beverages business and India food business, so they have been grown by 7% and 12% respectively. Now let's have a look upon company's balance sheet. So balance sheet के अंदर अपन देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना पेड अप शेयर कैपिटल को इंक्रीज करा है विच इज अराउंड 46%. और अपन ये भी देख सकते हैं कि जो कंपनी की नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो भी 45.72% से इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू मार्च 19, विच इज़ मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. और लीज लाइबिलिटी में इतना फर्क इसलिए आया है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली मार्च 20 के अंदर इंडेज 116 को अडॉप्ट करा है विच इज़ अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लीज कॉन्ट्रैक्ट. तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी की लीज लाइबिलिटी के रिकॉर्ड करने के तरीके पर. और because of this reason we can see a increase in non-current liability of the company in March 20 by around 45.72%. So now let's have a look upon company's cash flow statement. In this we can see that there is a significant increase in the net cash from operating activity in March 20 as compared to March 19, which is around 415%. This is again an impact of adopting a new accounting standard by the company which is Ind AS 116. According to Ind AS 116, the repayments of lease liability and related interest are need to be classified within financing activity rather than operating cash flows. We can also observe that there is a significant decline in the net cash from investing activity. Basically, the net cash from investing activity has converted into the negative cash flow and has declined by around 1000%, which is because of the increase in the investments by the company. As discussed above, the company has recently acquired business of Dhansri Tea and Industries to secure market share in Rajasthan. And the company also test launched a host of new food product categories through e-commerce outlets. We can also observe that the cash and cash equivalent in the end of the year is also increasing in the company from the last 5 years, which is also a positive sign from the point of view of investors, as this shows the efficiency of the company in generating cash. Now coming upon the ratios of the company, upon net profit margin ratio, gross profit margin, EBITDA margin और EBIT margin ratios आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे. तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन और EBIT मार्जिन पे देख सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, बट देयर इज अ डिक्लाइन इन net profit margin from March 19 and then in March 20 also. So as we discussed above also that this might be due to the increase in tax and other exceptional items cost. Coming upon the return ratios of the company, so ROCE, ROE and ROA वो March 18 तक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, बट अगेन March 19 और 20 के अंदर वो फिर डिक्लाइन हो रहे हैं, विच माइट बी अ कंसर्न फॉर कंपनी एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स. और अपन टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर देख सकते हैं कि वो डिक्रीज होकर March 20 के अंदर 0.09 पर आ गया है. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को इंक्रीज करा है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी दिस डिक्लाइन इन दिस रेशियो. Coming upon the peer comparison of the company, we can see the market cap of the Tata Consumers is way higher than its competitors, which is a positive sign for the company. The quarterly net profit of the company is negative, which is basically due to the COVID-19 impact, so this is not a major concern for the company. And the PE ratio and the PB ratios, these both ratios are higher of the company as compared to its competitors. This is again a matter of concern for the company. So now let's have a look upon the SWOT analysis for the company. Let's begin this segment with the strength of the company. So FII and FPI institutions are increasing their shareholding in this company. Lots of mutual funds have invested in this company. This shows कि जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इस कंपनी से. और इस कंपनी का जो टी एंड सॉल्ट बिजनेस सेगमेंट्स है वो भी लीडिंग पोजीशन के अंदर है इंडिया के अंदर. And these businesses will continue to contribute to a significant share of their revenue growth in the next few years also. और जो कंपनी का सेल्स नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है. And currently company is using technology to improve their execution capabilities also.
Now let's have a look upon their weakness. So decline in quarterly net profit and net profit margin, both in year-on-year basis and quarter-on-quarter basis, is a matter for concern for this company. Also, mutual funds have decreased their shareholding as compared to its last quarter, and promoters too have pledged their small stake. So this is again a matter for worry of this company. Now let's have a look upon the opportunities of the company. तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पब्लिक है वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच जो कंजम्पशन है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का उसके अंदर भी इंक्रीज आ रहा है, विच इज़ अगेन अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी. कोविड-19 क्राइसिस हैव प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज विद अ लाइकली इंक्रीज इन होम कंजम्पशन, and TCPL has announced that it will acquire PepsiCo's stake in Nourish Company Beverages, a 50-50 joint venture with the two companies. So this is again a good thing for the company, as it will help the company to expand and grow its operations. Coming upon the threats, so due to COVID-19, parts of TCPL business have catered to out of home consumption have been adversely impacted. और अगर ये क्राइसिस आगे तक कंटिन्यू रहता है, which is most likely to happen, then it will going to impact the company more adversely in the future. And also जो कंपनी की स्टॉक का PE रेशियो है वो भी काफ़ी हाई है, which is again a threat from the point of view of an investor. So after all these analysis, we can say that company's fundamentals are not that great. They are not even bad also, hence they lie in between somewhere. The positive thing is that TCPL is a subsidiary of Tata Group. But still, one should consider the threats and recent performance of the company before investing in it. That's all from our side. Thank you for watching the video. If you like the video, then please press the like button, share it with your friends, colleagues and family, and do share your valuable feedback with us, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.